आपको पता है इंडिया अपने अप्रॉक्स 35% डिफेंस इक्विपमेंट और टेक दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, लाइक रशिया, द यूएस एंड फ्रांस. बट दिस इज अबाउट टू चेंज. वी विल सी मोर मेड इन इंडिया इक्विपमेंट एंड दिस इज व्हाई. Welcome to yet another episode of Markets Decoded. I'm Kanishka Gupta. Let's get started. डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज करा है एक 100+ पेज डॉक्यूमेंट जिसका नाम है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 और TPCR. नाउ ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है व्हाट द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विल नीड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एरियाज जिसमें इंडिया का डिफेंस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मैसिव कैपिटल एलोकेशन. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, दिस इज द वन वीडियो you should watch to understand the big picture. See, today, global companies like Sukhoi, Rosoboron Export, Lockheed Martin, Boeing, and Dassault are doing big business in India. With TPCR 2025, Defense Ministry चाहती है कि Indian industry, including PSUs, private companies, MSMEs, and startups, visibility रहे इन companies को कि what Indian Army, Navy, and Air Force want, so they can align R&D, investments, and capacity building in advance for them. For context, ये पहली बार नहीं है that the Defense Ministry has come up with such a document. In 2013, the first TPCR came out, but experts को लगा that was more an aspirational list than an actionable plan. इसलिए 2018 में एक revised industry-friendly TPCR आया with realistic priorities aligning with Make in India. Now fast forward to today, जो 2025 का रोड मैप है, इसमें स्पेसिफिक नंबर्स हैं, जैसे 1800 tanks to replace T-72 fleet for the army, 150 stealth drones and 10 frigates among others. See, as an investor who is looking to invest in India's growth story, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि which companies are already working in this direction. So we'll go for the plan, one by one. This is the plan for the army. Induct nearly 1800 future tanks to replace the T-72 fleet, 400 light tanks for mountain warfare, 50,000 tank-mounted anti-tank guided missiles, and over 700 robotic counter IED systems. See, जो companies already in areas में काम कर रही हैं, they are BEML, L&T Defense, Tata Advanced Systems, Mahindra Defense. They are working on armored vehicles and tank programs. फिर आता है भारत डायनेमिक्स और BDL, इंडिया का लीड मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. Then we have companies like Zen Technologies and Tonbo, which are working on imaging simulators, counter drone and robotic battlefield systems. Now let's look at the plan for the Navy. The Navy will get 1 new aircraft carrier, 10 frigates, 7 corvettes, 4 landing dock platforms, plus nuclear propulsion and electromagnetic launch systems. जो कंपनीज ऑलरेडी इन एरियाज में काम कर रही है वो है कोचिन शिपयार्ड, द सेम PSU कंपनी जिसने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया है. नाउ दिस कंपनी कुड बी अ की फॉर फ्यूचर कैरियर प्रोग्राम्स. देन वी हैव Mazagon Dock Shipbuilders and GRSE for frigates, destroyers, corvettes. Next is L&T Defense for submarines and nuclear propulsion modules, and BEL and Paras Defense for radars, combat systems, and naval electronics. Now let's look at the plan for the Air Force. They will acquire 75 high-altitude pseudo-satellites, 150 stealth bomber drones, hundreds of PGMs, and 100+ remotely piloted aircrafts. Now some companies which are already working in these areas are HAL, Adani Defense, and Idea Forge. We also have companies like Data Patterns and Paras Defense for avionics, optics, and satellite subsystems. We also have BDL and Solar Industries for guided missiles and smart munitions. See, you need to remember that these are not stock recommendations at all. We are talking about the key players in the industry. Simply put, India is not buying weapons, it is building an entire ecosystem of indigenous defense tech. But before investing your money, do remember, defense is a long gestation business. Regulatory approvals, technology validation, production scaling all take time. Plus, government payment cycles, which can be stretched. This means once you're in, you're in. Defense contracts mean 10 to 15 year order books,
inflation indexed pricing, and often sole source supply arrangements, the switching costs are massive. Remember, इंडिया का डिफेंस रोड मैप सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है. इट इज़ अ मैसिव कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी ओवर 15 ईयर्स. जो कंपनीज इंडिजिनस R&D को आज क्रैक कर सकती है, दे कैन बिकम टुमारोज डिफेंस जायंट्स. इन्वेस्टर्स के लिए बात सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स खरीदने की नहीं है. असली टास्क है उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जो अपना प्रोप्राइटरी टेक बना रही है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रही है और एफिशिएंटली स्केल कर रही है. The message is clear. India's defense future depends on greater collaboration between the public and private sector. That's your roadmap to India's defense transformation. Which sector would you like us to cover next? Tell us in the comment and subscribe to FIRES for more such insights. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.